Hello students, BSc Zoology Honors Part 1. The next criteria for the classification of metazoans is body cavity and coelom, that we are going to discuss now. There are many types of cavities present in the body. For example, vacuoles, spaces, lacunae, ventricles, and these have been of importance in all organisms, whether it is plant or animal. All animals have cavities, and these cavities perform different functions in different animals. But most of these are not usually considered a body cavity. For example, spongocoel found in sponges, phylum Porifera, is a cavity in sponges. But in reality, it is a system of water canals. लेकिन जब हम बॉडी कैविटी बोलते हैं उसका मतलब है एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, and that space is lying between the body wall and internal organs. Bilateral animals को further classify किया गया है on the basis of presence or absence of body cavities. And there are two types of body cavities in animals: pseudocoelom and coelom. Means these are true body cavities. See, first of all, we will see pseudocoelom, acoelom, then pseudocoelom, and then true coelom. We'll see one by one. Is this picture clear to you, students? If this is clear to you, then focus here on acoelom. चूंकि प्लेटीहेलमिन्थिस सीलोम का सवाल पैदा नहीं होता प्लेटीहेलमिन्थिस से पहले। ओके, यहाँ फाइलम पोरीफेरा भी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा में सीलोम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीलोम का सवाल तब पैदा होता है जब एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया हो, उसके बाद भी उसमें सीलोम नहीं है, तब वह एसीलोमेट कहलाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल in which coelom is not, true body cavity is not present, then that animal is called as acoelomate. For example, platyhelminthes, not even in coelenterata, diploblastic है. The correct example of this would be platyhelminthes, acoelom. क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थिस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद भी इसमें सीलोम नहीं है। मेसोडर्म है, फिर भी सीलोम नहीं है। पोरीफेरा और coelenterata में तो मेसोडर्म है ही नहीं। ओके, so those are not acoelomate, they are diploblastic simply. So see, platyhelminthes जिसके पास एग्जाम्पल है इसका acoelomate का, they do not have a body cavity surrounding the gut. See, this is gut, and they do not have any cavity, body cavity, which is surrounding the gut. मेसोडर्म है लेकिन गट नहीं, लेकिन सीलोम नहीं है।
This yellow one is endoderm, orange color is mesoderm, orange color layer is mesoderm, and this purple color layer is ectoderm. Platyhelminthes. तो इसमें the mesoderm completely fills the space between body wall and alimentary canal. See, if this is body wall and this is alimentary canal, then the alimentary canal including endoderm, then this orange color mesoderm has completely filled the space between body wall and alimentary canal. So the mesoderm here is completely filling the space between body wall and alimentary canal. That is in the form of a network of cells called parenchyma. This is called parenchyma. Such animals are called acoelomates. Acoelomate. लेकिन निमेटोडा में, एस्कीहेलमिन्थिस में सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. Here, mesoderm is confined to specific circumscribed regions. Okay, it is not labeled here. तो बढ़िया से you see, this is mesoderm. The mesoderm here is confined in some regions within body cavity, and this cavity is neither lined and nor filled with the mesoderm. So यह cavity, this cavity is not completely lined by the mesoderm. सिर्फ mesoderm का lining यहाँ पर है. Not outer lining जो है वो mesoderm से नहीं lined है, and inner lining of this middle layer is also not lined with the mesoderm. Instead, mesoderm is confined to specific circumscribed regions. ठीक है, हम इसको कैविटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्लास्टोसील से डिराइव्ड हुआ है. Pseudocoelom. This is pseudocoelom. An element will be called as pseudocoelomate. Okay, so this persistent blastocele, this one of the embryo, is called as pseudocele. And the internal organs are free within pseudocele. And the body cavity has no lining of peritoneum derived from mesoderm. And animals constructed like this are categorized, are called as pseudocoelomates. Okay. Now coming to coelomate, true coelomate. Coelom this is mesoderm. This is mesoderm, mesenteries, and mesoderm. I draw it as a thick line so that you clearly see it. ट्रू सीलोम कहते हैं
बॉडी कैविटी, वैसी बॉडी कैविटी जो अराइज होती है विद इन एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म, मीजोडर्म के अंदर से वो कैविटी निकली, so that the cavity lies between the body wall and gut and is lined at the same time, it is also lined by the mesodermal cells. बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम कैविटी की लाइनिंग पेरिटोनियम कहलाती है in higher animals, and various internal organs are housed in the coelom and are lined by, and coelom is lined by peritoneum. Peritoneum is having the origin of mesoderm, so this lining is peritoneum. यानी सिलोमेट में पेरिटोनियम है, सीडोसिलोमेट में पेरिटोनियम नहीं है। एसिलोमेट में तो कोई कैविटी ही नहीं है, तो पेरिटोनियम का भी सवाल नहीं होता है। सीडोसिलोम में कैविटी है बट पेरिटोनियम नहीं है। सिलोमेट में कैविटी भी है, पेरिटोनियम भी है। आया समझ में स्टूडेंट्स? So this lining is called peritoneum in higher animals, and their internal organs are housed in this coelom, and the coelom is lined by peritoneum, and peritoneum is attached or it is present with mesentery. These are mesenteries. Mesentery is also mesodermal in origin. Basically, these are thin membranes that keep the internal organs in proper place. The fluid inside the cavity acts as shock absorber. फ्लूइड, एक खाली वैक्यूम तो रहेगा नहीं, इसके अंदर फ्लूइड है, and that acts as shock absorber and it gives rigidity to the body as well. And the coelom here is involved in the circulation, excretion and respiration in invertebrates. अब देखिए, जो सिलोमेट एनिमल हैं उनमें भी दो प्रकार है। एक का नाम है एंटेरोसीलस, दूसरे का नाम है सीजोसीलस। ओके, तो एंटेरोसिलोमेट्स एंड सीजोसिलोमेट दो कैटेगरी हो गई। बिकॉज देयर आर टू पैटर्न्स ऑफ सिलोम फॉर्मेशन इन एनिमल। दो तरह के सिलोम का फॉर्मेशन है एनिमल्स में। एक कहलाता है सीजोसीलस, SCHIZOCOELOUS, Physiocoelus and Enterocoelus. Enterocoelus. दो तरह के एनिमल्स हैं, दो तरह के सिलोमेट एनिमल्स हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये और है क्या? तो आप ये जान लीजिए कि सीजोसीलस टाइप ऑफ सिलोम, बेसिकली these are, there are two ways by which coelom is formed. One way is sejocoelous way, another way is enterocoelous way. So sejocoelous way of formation of coelom you will find in protostome, and enterocoelous way of coelom you will find in deuterosomes.
ओके, यानी जिसमें माउथ पहले अपीयर हुआ प्रोटोस्टोम, उसमें सीजोसीलस टाइप ऑफ सीलोम फॉर्मेशन है। जिसमें एनस फर्स्ट अपीयर हुआ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट, they are deuterosomes. In deuterosomes you will find enterocoelous type of coelom formation. वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि इसके आधार पर भी अब सिलोमेट में बट गया आपका बायलैटरलिया, बायलैटरिया बट गया आपका एसिलोमेट, सिलोमेट एंड प्रोसिलोमेट में। इसके पहले बायलैटरिया को बांटे थे किसके आधार पर? क्लीवेज के आधार पर बांटे थे बायलैटरिया को, स्पाइरल एंड रेडियल क्लीवेज। ठीक है, अभी बायलैटरिया को हम बांटेंगे on the presence of the basis of coelom, on the basis of presence or absence of coelom। तो बायलैटरिया बट गया एसिलोमेट में, सीडोसिलोमेट में एंड ट्रू सिलोमेट में। ट्रू सिलोमेट हो गए आपके कौन से एनिमल्स? एनेलिडा ऑनवर्ड्स। प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस को छोड़ दिया, उसके बाद जितने नीचे वाले फाइलम हैं वो सब ट्रू सिलोमेट्स हैं। तो कई सारे फाइलम हो गए। अब उनको भी ट्रू सिलोमेट में भी बहुत डाइवर्सिटी है। ट्रू सिलोमेट वाले एनिमल्स को दो तरह का सिलोम फॉर्मेशन है उनमें पाया जाता है, तो उन दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक, इन सीजोसीलस पैटर्न, here you can see in this picture, this belongs to सीजोसीलस। okay, so what you see in this picture peculiar, आपको पॉइंटर दिख रहा होगा मेरा, देखिए इन सीजोसीलस पैटर्न टीलोब्लास्ट सेल्स, दैट इज आपका हो गया मीजोडर्मल सेल्स। बेसिकली मीजोडर्म में डिफरेंशिएशन होने से पहले वाले सेल्स, दीज सेल्स रेड से बना रहे हैं, दीज आर प्राइमोर्डियल मीजोडर्मल सेल्स। ठीक है, तो टू ग्रुप्स ऑफ सच सेल्स आर गिवन आउट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द न्यूरुला, सॉरी न्यूरुला भी नहीं, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला। So two groups of teloblast cells that is primordial mesodermal cells are given out from the lips of gastrula, and that is close to the blastopore. And these cells proliferate further into a pair of teloblastic bands. See, पहले बैंड सॉलिड थे, बट लेटर ऑन वह बैंड स्प्लिट होके फॉर्म किए एक कैविटी उसके अंदर। पहले सॉलिड बैंड था, उसके बाद स्प्लिट हुआ, बीच में खाली जगह हो गई और वह फिर ग्रो किया, एंड नाउ दैट band is now occupying the remaining portion of the blastocele. ये blastocele है, this is the remaining portion of blastocele here, this is the remaining portion of blastocele here. इसमें you will not find the blastocele. Blastocele is highly reduced. Okay, therefore this opening blastopore is turned up into mouth and anus forms later. जब ये फ्यूज करेगा तब कौन? आर्केंटेरॉन इसमें आउटर लेयर में फ्यूज करेगा, देन दैट विल बिकम एनस। और बैंड ऑफ टीलोब्लास्ट मेसोडर्मल सेल्स हियर एंड हियर, it will occupy the this cavity blastocele,
ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Later on, this cavity which has newly formed cavity enlarges to form coelom. Such a coelom is known as caecocoel. An animal is characterized by body cavities of this type are designated as caecocoelomates. caecocoelomate का एग्जाम्पल हो गया आपका एनिलिडा, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड, ठीक, और हो गए आपके एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, मोलस्का भी है, मोलस्क, ये हो गए caecocoelus. Now coming to Enterocoelus. In Enterocoelus, development of, see, focus here. We are Enterocoelus. In Enterocoelus, development of coelom, the mesoderm, arises in embryo as paired lateral pouches. See, this is the pouch which has arisen from the archenteron. Okay. Pouches then grow and later get disconnected from the archenteron. This pouch is growing and it will disconnect from the archenteron. And archenteron will fuse the body wall. जहां पर archenteron fuse किया body wall में, that will become mouth and the blastopore will become anus. ठीक? And the cavity of the pouch becomes coelom. This becomes coelom. Here also, this one is coelom. The formation of this coelom is different than formation of this coelom here. Okay. यहाँ पाउच से बना, यहाँ बैंड से बना, टीलोब्लास्ट बैंड से, प्राइमोर्डियल मेसोडर्म से, वो स्प्लिट हुआ तब कैविटी अंदर जनरेट हुआ. यहाँ पर आर्केंटेरॉन से, यानी आर्केंटेरॉन इज फ्यूचर एंडोडर्म, उससे दो पाउच निकले, वन पेयर ऑफ पाउच, पाउच ग्रो हुए, बड़े हुए और पाउच स्प्लिट आउट हुआ आर्केंटेरॉन से और उसके अंदर कैविटी डेवलप हो गया एंड दैट कैविटी इज द सीलोम. ओके स्टूडेंट्स, ठीक. अब देखिए इनर, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? इनर वॉल ऑफ द पाउच सराउंड्स द डेवलपिंग एलिमेंट्री कैनाल. दिस इज इनर वॉल ऑफ द पाउच and it is surrounding the alimentary canal. And the outer layer, this outer layer lines the developing body wall. These two layers become future mesoderms. यानी जो बॉडी वॉल का इंटरनल लाइनिंग और गट का एक्सटर्नल लाइनिंग, यह बन जाएगा मेसोडर्म. And the animals possessing such cavities are known as enterocoelomates. Examples are echinoderms, chordates, hemichordates, ये सब है. ठीक.
तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स ये सीलोम and the formation of coelom, its origin in short is going to be is over. सीलोम से क्या फायदा होता है? Coelomate animals, coelom provide them tube within a tube body plan, and also it provides greater flexibility when compared to the animals that do not have internal body cavity. साथ ही साथ फ्लूइड फिल्ड सीलोम additionally serve as hydrostatic skeleton in some worms, some forms such as worms, जिसकी मदद से वो बरोइंग कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन हो सकता है उनमें। सीलोम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एनिमल इवोल्यूशन में, सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है, एंड इट इज a stepping stone for evolution of more complex and larger forms. Once true coelom is developed in Annelida, then evolution became more complex and larger forms of the animals later on developed. Once the true coelom has emerged in evolution. So students, in the next class, we will see the next criteria of general body plan. Okay. Cephalization and segmentation that we will see. Thank you.